Good morning, students. I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 11 of class 8. And the chapter name is Electricity and the Circuits. Let's see what are its learning objectives. Electric current, chemical effects of the electric current, general terms commonly used in describing the chemicals, effects of electricity, electrolysis, the voltaic cell, the dry cells, and the solar cells. So now let's start our chapter. Electricity is supplied to our homes from powerhouses through the wires. Inside the home, it flows through the wires to all the rooms. Electricity that flows through wires is known as the current electricity. The charges in current electricity are in motion. They flow through electric wires and gadgets. जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउसेस में सप्लाइड होती है पावर हाउसेस की थ्रू वायर्स की हेल्प से, ओके, और होम के अंडर ये फ्लोज करती है वायर्स जो कि हमारे सारे रूम्स के अंडर होते हैं, ओके। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वायर से उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और जो चार्जेज होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो होते हैं मेरे मोशन में, ओके। दे फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स एंड गैजेट्स. There is another kind of electricity termed as the static electricity that does not flow. If you keep your hand close to a TV screen, you can feel that the hairs on your arms are attracted towards the screen. This is due to static electricity present on the screen. एक और टाइप की इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो फ्लो नहीं कर रही होती है. Now the electric current. The flow of electric charges through a conductor produces an electric current. In most cases the electric current is produced. तो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक कंडक्टर के थ्रू, वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक करंट को, ओके। एंड इन मोस्ट केसेस इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. एक एक्सटर्नल सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ, ओके. बट कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बट कन्वेंशनली जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो टेकन होती है एज अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पे, ओके. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर, और जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर. द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय टर्म कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और जो डिफरेंस होता है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में वो एक्सप्लेन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो एक मेजर होता है एबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की कि कैरी कर पाए इलेक्ट्रिक करंट को, ओके. कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड्स. वी आर ऑफन एडवाइज्ड टू अवॉइड हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विद द वेट हैंडेड because some liquids, not all, are the good conductors of electricity. हमें बहुत ज्यादा एडवाइस किया जाता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमें यूज करना है तो उसको गीले हाथों से ना यूज किया जाए, क्योंकि कुछ लिक्विड्स, ना कि सारे लिक्विड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द वाटर वी आर यूज इज नॉट प्योर वाटर. जो बिल्कुल प्योर वाटर है यानी कि pH 7 वो मेरा प्योर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट जो वाटर हम घर में यूज करते हैं वो कंप्लीटली प्योर वाटर नहीं है. जनरली वेल वाटर, पॉन्ड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड टैप वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंप्योरिटीज, मोस्ट ऑफ व्हिच आर यूजुअली डिसॉल्व्ड सॉल्ट. मोस्टली जो वेल वाटर, पॉन्ड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर होता है उन सब में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, ओके, जो कि, और वो इंप्योरिटीज क्या होती हैं, यूजुअली डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स ही होती हैं. The presence of even a small amount of impurity makes water a good conductor of electricity. और जो प्रेजेंस होता है छोटी सी इंप्योरिटी का भी अगर प्रेजेंस है तो वो वाटर को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे, ओके. एक्टिविटी जोन. टू प्रूव दैट वाटर, सिंपल वाटर, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट प्योर वाटर इज नॉट.
Material required a dry cell, connecting wire, electric bulb, beaker, tap water and distilled water यानी कि pure water. Procedure: take a dry cell, connecting wire and electric bulb, connect the cell in the bulb with the connecting wire. Take a beaker and fill it with the about half of the distilled water. Dip the open ends of connecting wires in water as shown in the figure. इस तरीके से मेरे को शो करना है. Observation: bulb does not glow. Procedure: now test with the simple water. Observation: bulb glows. Conclusion: in case of pure water, bulb does not glow because pure water is a bad conductor of electricity. On the other hand, test with simple tap water, the bulb lights up. It proves that tap water is the conductor of electricity due to presence of dissolved salts in it. तो ये प्रूव करता है कि जो मेरा टैप वाटर होता है वो एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. टचिंग एंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस विद वेट हैंड्स कुड देयरफॉर बी डेंजरस. इसीलिए मेरे को इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस अगर मेरे वेट हैंड से मैं टच करूंगा तो वो डेंजरस हो सकते हैं. Because of electrical conductivity, we get shock when we touch an electrical appliance with wet hands. The water of our hand makes a conducting path between our body and the appliance, and hence we get a bad shock. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से हमें शॉक लग जाता है जब भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को वेट हैंड से टच करेंगे. वाटर जो हमारे हाथ में है और कंडक्टिंग पाथ बेसिकली क्रिएट कर देगा बॉडी और उस एप्लायंस के बीच में, तो हमें एक शॉक लग सकता है. Now the chemical effects of the electric current. बेसिकली हमें पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. Now the activity zone. To know the chemical effect of a current, materials required: a beaker, water, sulfuric acid, H2SO4, dry cell, and a connecting wire. Procedure: take water in a beaker, add a few drops of dilute sulfuric acid, H2SO4 to it. Take two connecting wire and connect an end of each dye cell as shown in figure and dip to the other ends into the water. Observation: we observe that bubbles of gases come from the water near the wires. Conclusion: the bubbles coming from the water are of hydrogen and oxygen. Thus we conclude that electric currents break up water into its constituent gases. इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? जो बबल्स हो रहे हैं वो मेरे जो कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंसिस्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ब्रेक कर देगा वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस के अंदर. और कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस क्या है उसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. This activity established that when electric current is passed through certain liquids or solution that conduct electricity, chemical changes occur. This is called the chemical effect of electric current. So यही मेरा होता है chemical effect of electric current कि जब भी electric current पास होता है कुछ liquids या solutions के बीच में से, तो जो basically conduct कर रहे electricity वो chemical change occur करा देगा. Okay, now uses of the chemical effect. To purify metals such as the copper, tin, silver and gold. Metals को purify करने के लिए जैसे कि copper, gold, silver. To extract the metals from their ores, aluminium and sodium. अगर मेरे को metals extract करने हैं उनके ores में से जैसे कि aluminium और sodium. For electroplating, which is the process of coating a thin layer of metal over the another by process of electrolysis. Electroplating करने के लिए जो एक process है जिसमें coat किया जाता है thin layer of metal कि another पे by the process of the electrolysis. General terms commonly used in describing the chemical effects of electricity. General terms which are used are electrolyte. A substance which furnishes ions in a solution or when melted is called an electrolyte. It may also be defined as a substance which conducts electricity when dissolved in water or when melted is called an electrolyte. ऐसा सब्सटेंस जो फर्निश करता है आयन सॉल्यूशन में और या जब भी वो मेल्टेड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब डिजॉल्व होता है वाटर में या जब भी मेल्टेड होता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर टिपिकल इलेक्ट्रोलाइट्स. जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे कि H2SO, sulfuric acid, sodium chloride और sodium hydroxide. Cation and anion. An electrolyte when dissolved in water or when melted produces the ion.
एक इलेक्ट्रोलाइट जब डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, ओके, या फिर मेल्टेड होता है तो प्रोड्यूस करता है आयंस. नाउ दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन. द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड द कैटायन एंड द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड द एनायन. ये जो आयंस मेरे फ्री हुए हैं वो बेसिकली फ्री होते हैं कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो मूव कर पाए. जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको मैं बोलता हूं कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको मैं बोलूंगा एनायन. इलेक्ट्रोड, a metallic wire or rod or plate through which electric current and either enters or leaves an electrolytic solution is called electrode. एक ऐसा मेटेलिक वायर या फिर एक रॉड जिसके बीच से इलेक्ट्रिक करंट आइदर एंटर्स करता है या फिर लीव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको मैं बोलता हूं एक इलेक्ट्रोड. कैथोड एंड एनोड. In an electrolytic cell, the electrode at which the electricity enters the solution is called the anode and the electrode at which current leaves the solution is called the cathode. एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोड जो भी होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स करती है सॉल्यूशन को, उसको हम बोलते हैं एनोड, और इलेक्ट्रोड जिस पे करंट लीव्स करता है सॉल्यूशन तो उसको हम बोलेंगे एक कैथोड. In an electrolytic cell, the anode is positively electrode and the cathode is negatively electrode. एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है. Voltmeter, an instrument which is used for the in measuring the voltage across the two electrodes is called voltmeter. Voltage is measured in the volts. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर, और ये वो मेजर किस में होता है, वोल्ट्स में. Ammeter is an instrument which is used for measuring the current flowing through the circuit and current is measured in amperes. Ammeter जो होता है वो मेरा करंट मेजर करने का काम आता है और करंट मेजर होता है मेरा एम्पियर्स में. Electrolysis. It was found by Sir Humphrey Davy that when electric current was passed through certain substances, they underwent a chemical change to give a new substance. This is called electrolysis. सर हम्परी डेवरी ने ये फाइंड आउट किया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करूं कुछ ऐसे सर्टेन सब्सटेंसेस में से, तो एक केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होता है जिससे कि एक न्यू सब्सटेंस बनता है. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. Thus, the production of a chemical reaction by passing an electric current through electrolyte is called the electrolysis. Mechanism of electrolysis. When an electrolyte is melted or dissolved in water, its atom or group of atoms from the ions. Ion are particle that bear the electric charges. जब भी इलेक्ट्रोलाइट जो होता है मेल्ट होता है फिर डिजॉल्व होता है वाटर में, उसके अपने एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं आयंस. नाउ अब ये आयंस जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो बियर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को. ओके, as we know, if the charges are positive, the ions are called the cations. If they are negative, then the ions are called anions. अगर चार्जेस मेरे पॉजिटिव होंगे तो कैटायंस होते हैं और अगर चार्ज नेगेटिव होंगे तो वो होते हैं एनायंस. ओके, बिकॉज दे इलेक्ट्रिकली चार्ज, आयंस कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन. वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं इसलिए आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when electricity is passed through acidified water using a platinum electrode, it decomposes into hydrogen and oxygen gases. जैसे कि एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी में पास करूंगा एक एसिडिफाइड वाटर में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से, तो वो डिकम्पोज कर देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में. Now, activity zone. To prove that water is made up of hydrogen and oxygen combined together in the form of 2:1 by volume. Materials required: a beaker, battery, 2 thick copper wire, sodium hydroxide, 2 large test tubes, and platinum electrode. Procedure: first half of the beaker, fill half of the beaker with water and dissolve 2-3 pellets of sodium hydroxide in it. Fill 2 test tubes with this water. Place them over the open ends of 2 wires in the beaker. Connect the other end of the wire to a battery. Observation: bubble of gases are seen evolving at the ends of the wires in the beaker. The gases liberated are collected in 2 test tubes by the downward displacement of the water. After some time, note down the volume of 2 gases collected in the test tube. Conclusion: the gas collected a cathode test tube A is double in volume than the collected anode test tube B. The volume of the 2 gases collected are in the form of ratio 2:1. Therefore, it is concluded that water is made up of hydrogen and oxygen combined in the ratio
2:1 बाय द वॉल्यूम। तो इससे कंक्लूजन मिलता है कि जो भी वाटर होता है वो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, जो रेशियो में होता है 2:1 बाय द वॉल्यूम। Now the usage of electrolysis. Electrolysis is used in the extraction of metals from their ore. Electrolysis मेरा extraction of metals होता है ores में से। It is used for refining certain metals such as the copper and zinc. Electrolysis is used for electroplating many things which we use every day. Electrolysis is used in the manufacture of chlorine in submarine. Oxygen produced by the electrolysis of water is used for the breathing. इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में भी काम आता है। तो सबमरीन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट्स यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग। Refining of the metals. The metals obtained by the chemical reduction method generally contain many impurities. Such metals can be refined very easily by the electrolytic method. The method of purifying metals by using electricity is called the electrorefining. Metals such as zinc, copper, silver, nickel, gold, aluminium are refined by the electrical method. जो मेटल्स ऑब्टेन होते हैं केमिकल रिडक्शन से वो जनरली कंटेन करते हैं बहुत सी इम्प्योरिटीज। अब उन इम्प्योरिटीज को रिफाइन हम इजीली कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। और जो मेथड होता है प्यूरिफाइंग मेटल्स बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। नाउ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Electroplating is the process of depositing a thin layer of any superior metal over an object of a cheaper metal with the help of electric current. Deposition of silver on brass or copper object and that of copper, nickel, chromium on object made up of iron is done by the electroplating. Electroplating एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिपोजिट कर दिया जाता है एक थिन लेयर ओके सुपीरियर मेटल की ओवर एक ऑब्जेक्ट ऑफ चीपर मेटल। किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से। लाइक डिपोजिशन होना सिल्वर का ब्रास के ऊपर या कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर कॉपर, निकल, क्रोमियम का ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं मेड अप ऑफ आयरन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. टू नो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, we electroplate a spoon with silver and follow the process given below. We take a spoon which is to be electroplated. Clean the spoon by dipping it in acid and alkaline solution. Now put the spoon and silver rod in a vessel containing potassium cyanide solution. Connect the negative terminal of a battery to the spoon and positive terminal of the silver rod, same as shown in figure. The spoon acts as the cathode and the silver rod act as the anode. Now pass the electric current through the solution. The positively charged ions of a silver are attracted to the cathode and the coating is deposited on the spoon surface. Advantages of the electroplating. Electroplating is done for the following purpose: for decoration purpose, silver और gold plating of brass ware such as flower vase. ये मेरे बेसिकली कई सारे पर्पज के लिए होता है, उनमें से एक है मेरा फॉर डेकोरेशन पर्पज, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग ऑफ ब्रास वेयर होता है जो भी फ्लावर वेस होते हैं। फॉर प्रिवेंटिंग द कोरोजन, आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी protected by the electroplating with nickel. Brass objects such as bathroom fittings are electroplated with the chromium. आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल के हेल्प से, और ब्रास ऑब्जेक्ट जो होते हैं बाथरूम फिटिंग्स में वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं क्रोमियम से। नाउ द वोल्टेक सेल. It was the Italian scientist Volta who provided us the first electric cell in the year 1800. Italian scientist Volta थे जिन्होंने 1800 में ये वोल्टेक सेल दिया सबसे पहले। The simple voltaic cell is made up of taking a glass container, dilute sulfuric acid and two metal rods, one of copper and the other of zinc. जो बिल्कुल सिंपल वोल्टेक सेल था वो उसके अंदर एक ग्लास कंटेनर था, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और दो मेटल रॉड्स थे, एक कॉपर का और एक अदर था जिंक का। द कंटेनर इज फिल्ड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन एंड द टू रॉड्स आर डिप्ड इन इट. जो कंटेनर था उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और दो रॉड्स उसके अंदर डिप कर रखे थे. व्हेन द रॉड्स आर जॉइंड विद द वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. जब भी रॉड्स मेरे ज्वाइन कर दिया जाते थे वायर से तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है स्टार्ट फ्लोइंग शुरू हो जाता था. When the two rods are dipped in acid solution joined with the wire, the acid attacks the zinc and release the minute bubbles of hydrogen. जब मेरे दो रॉड्स जो डिप होते थे एसिड सॉल्यूशन में, जैसे ही उनको ज्वाइन कर दिया जाता था एक वायर के साथ में, तो एसिड जो था वो मेरा अटैक करता था जिंक को
और वो रिलीज कर देता था माइन्यूट बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, these escaping bubbles of the hydrogen leave the electrons on the zinc plate so that zinc plate becomes negatively charged। ये जो escaping bubbles थे वो हाइड्रोजन के लीव आउट कर देते थे इलेक्ट्रॉन्स जिंक प्लेट पे, so that जो जिंक प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। Okay, the escaping these bubbles pass over to the copper plate, snatch their missing electrons from the copper plate and make it positively charged। और जो escaping bubbles थे ये पास ओवर हो जाते थे कॉपर प्लेट को, जो स्नैच कर देते थे अपने मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉपर प्लेट से, जिससे कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था। Now the dry cell, the cell which is used in our torch is known as the dry cell. It is however only a compact form of the like-Enquiring cell. There is no essential difference between the dry cell and the like-Enquiring cell। जो सेल जो हमारे टॉर्चेज में यूज होता है उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल, और ये हाउएवर जो होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है एक like-Enquiring सेल का, और कोई एसेंशियल डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। ड्राई सेल वी यूज अ जिंक कंटेनर and this replaces the glass container as well as the zinc rod of the like-Enquiring cell। ये जो ड्राई सेल था उसके अंदर जिंक कंटेनर होता है तो जो रिप्लेस कर देता है ग्लास कंटेनर को एज वेल एज जिंक रॉड को like-Enquiring सेल का। ऑल्सो द पोरस पार्ट ऑफ ए like-Enquiring सेल इज रिप्लेस्ड हियर। जो पोरस पार्ट था like-Enquiring सेल का वो भी रिप्लेस कर दिया गया मसलिन क्लोथ बैग से और अ पोरस कार्डबोर्ड। Also, the ammonium chloride solution is replaced by a paste of ammonium chloride and glycerine। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को भी रिप्लेस कर दिया एक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ग्लिसरीन से। Because of these changes, the dry cell is portable and convenient to use. It is therefore the most commonly used form of simple electric cell we use in torch, radio, hair dryers, electric toys and many other such devices। इन्हीं सब चेंजेस की वजह से जो ड्राई सेल हो गया वो पोर्टेबल हो गया और कन्वीनियंट टू यूज हो गया, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये मोस्टली इन टॉर्चेज, रेडियो, हेयर ड्रायर्स, टॉर्च के अंदर। नेक्स्ट आर द सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। अ सिंपल सोलर सेल इज मेड फ्रॉम थिन वेफर ऑफ सिलिकॉन। सम आर्सेनिक एटम्स आर एम्बेडेड इन दिस सिलिकॉन वेफर एंड द ट्रीटेड वेफर इज देन कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड बोरोन। जो सोलर सेल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं सेमीकंडक्टर्स, ओके, और एक सिंपल सोलर सेल जो होता है वो मेड अप ऑफ होता है थिन वेफर ऑफ सिलिकॉन। कुछ आर्सेनिक एटम्स जो होते हैं वो एम्बेडेड कर दिए जाते हैं इस सिलिकॉन वेफर में और उनको ट्रीटेड वेफर जो होता है कोटेड कर दिया जाता है एक थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड द बोरोन। दिस ट्रीटमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज p-n जंक्शन। और ये ट्रीटमेंट जो हुआ वो फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, p-n जंक्शन। अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट दिस स्पेशली डिजाइन्ड p-n जंक्शन प्रोवाइड अस विद एन इलेक्ट्रिक करंट। और सनलाइट के एक्शन में ये जो p-n जंक्शन बना है वो हमें प्रोवाइड करता है एक इलेक्ट्रिक करंट। सोलर सेल्स आर नाउ फाइंडिंग इंक्रीजिंग प्रैक्टिकल यूज बिकॉज दे आर अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोलर सेल्स हैं वो इस समय एक बहुत ट्रेंडिंग इंक्रीजिंग प्रैक्टिकल यूज बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। The current provided by solar cell when sunlight falls on it may be used to charge a storage battery which may even used during the night time। और जो करंट जनरेटेड हुआ है सोलर सेल से जब सनलाइट फॉल होती है तो वो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के भी काम आती है। Now let's recall the chapter. There are two types of charge, positive and negative. Electric current is the flow of electrons. The SI unit of electric current is ampere. The materials that allow electricity to flow through them easily are called the conductors. Materials that do not allow electricity to flow through them easily are called the insulators. Electrical conductivity is a measure of the ability of a substance to carry the electric current. Lemon has the capacity to produce its own electricity. A solution of an electrolyte is called electrolytic solution. It was the Italian scientist Volta who provided us the electric cell. Now the glossary: insulator, materials that do not allow electricity to flow through them. Conductors, a substance that allow electricity to flow through them. Ampere, SI unit of electric current. Electrolytic solution, a solution of an electrolyte. Electrolyte, a substance which furnishes iron in a solution or when melted. Cation, an ion with a positively electrical charge. Anion, an ion with a negatively electric charge. So now student, it's the time for the practice. SI unit of electric current is
kg, liter, ampere, watt. So SI unit of electric current is ampere. The positive charge ion is called the anion, cation, neutrons or electrons. It is the cations. The negatively charged ion is called cation, anion, protons, neutrons, anions. Opposite charges repel each other, attract each other, sometimes repel, attract, sometimes attract, generally repel. So it is the attract each other. Okay. Extraction of metals from their ore by the electrolysis is called the electrometallurgy. The conductors are the materials that dash the electricity to flow through them, allow the electricity. The positively charged ion is called the cation. In an electrolytic cell, anode is the positive charge electrode. Okay. In the electrolytic cell, cathode is negative charge. Two objects with the same type of charge dash each other, repel. Okay. Now, electrons are negatively charged. Neutrons is neutral, does not carry any charge. Ampere SI unit of electric current. Electroplating is based on the electric effect of electric current. Pencil LED is an conductor. Electrolytes produce the ion when dissolved in water. Pure water is the good conductor of electricity. No. All liquids are good conductor of electricity. No. Negatively charged ion is called cation. No. The direction of electric current is the direction in which the electrons flow. No. The cell that is essential the same as a Lagrange cell is the simple voltaic cell. Yeah, true. Okay. Now, name the unit of electric current. The electric current unit name is ampere. Name the sources of electric current. Sources could be anything like a battery, okay, generator or a power grid. Main source is this one only. Okay. Is the solar cell source of electric current? Yes, obviously. Name the 5 electrical conductors. The 5 electrical conductors are the silver, gold, aluminium, iron, and you can say nickel. Okay. Now define the voltmeter and define the ammeter. Basically, voltmeter and ammeter are the devices. Okay. And with the help of voltmeter, we can say that we can measure the volts, and it is in the volt. We can measure volt, and this is in V. With the help of ammeter, we can measure the current, and it is in the A, ampere. Okay. Now, for these all questions, short answer and long answer type question already described in the class, I will give you just reference where you can take a note. What do you understand by the electrical conductivity? Electrical conductivity is the measure of the ability of a substance to carry the electric current. Okay. What are the uses of the chemical effect? So uses of the chemical effect, you can note this paragraph. Okay. What do you understand by cation, anion, electrode, cathode, anode, voltmeter and ammeter? Okay, all these are given at the same place.
and in this paragraph you will get your answers like cation, anion, electrode, cathode, anode, okay, and an electrolyte. Now list the usage of the electrolysis. Usage of electrolysis, this paragraph you can take a reference. Describe in brief about the solar cell. Solar cell you can take a note from this paragraph. Okay. Is the impure water good conductor of electricity but pure water is not? How can you prove? Basically, pure water is not a it's a good conductor, while the impure water is a good conductor of electricity because of the presence of the impurities. Okay. Now for the proving purpose, already in the activity it has been described like this activity. In this pure water and impure water, that is the tap water is used, through which bulb will glow, and pure water bulb will not glow. Now explain the voltaic cell and the dry cell. Voltaic cell here is given and the dry cell here is given. Okay. Describe the chemical effects of the electric current. For the chemical effect of electric current, you can take a note of from this paragraph. Okay. Define the electrolysis and its usage. Usage of electrolysis is given in this paragraph, and for the electrolysis you can take a note from this paragraph and the mechanism also. Okay. Now what do you understand by the electroplating? What are its advantage, and describe the process in brief. Electroplating. Electroplating here is given here, process is given here, and the advantages are also given in this paragraph. So thank you class.